क्लिनिक्स इंडिया से हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि बीन सीइंग की फर्टिलिटी रेट और बच्चे पैदा होने में आजकल बहुत दिक्कतें हो रही हैं, उसके काफ़ी सब कारण हैं। फर्टिलिटी जो ये टेक्निक है, ये टेक्निक ज़्यादा पुरानी नहीं है हेल्थ केयर की। दिस इज जस्ट 40-50 ईयर्स ओल्ड. सो देर आर लॉट ऑफ चेंजेस विच आर कमिंग एवरी year, every month. Changes are happening, so we need to make sure that we are abrupt with it and we are changing every time, we are improving upon it every day, every time when we are there. So keeping that in mind, the doctors which we have, the technology which we have, the embryologists which we have, all are one of the best in the world, and they are the people who are doing research, they are the people who are pioneers, and they are the people who are actually doing all this advancement day in and out. So keeping that in mind, we feel at India level also, research, academics and this technology should come well in time rather than being delayed. For that purpose, this ART conference, which we are doing it every year, this is third year in row, and we are wanting it to be done much more. पहली दो हमने ये दिल्ली में की थी, इस बार first time we have come to Mumbai, and we are very happy that to see the crowd of all high-end doctors who have come in, and it's a complete block out there, up there. Without wasting much time, I think we have our group CEO, Mr. Suresh Soni, who's sitting on the right extreme. We have Professor Human Fatemi, who is there, our group medical director. We have Ibrahim sitting in the center, third number. He is our group embryology director. We have Dr. Richa, and Dr. Parul. Both of them are our medical director of ART Fertility Clinic India, and I am Dr. Somesh. I am CEO of ART India. So I think, Suresh, if you can just take it from here. Thank you. So, welcome and thank you for attending this conference. As Dr. Sumesh has explained, we have a very august body of experts in the field of IVF, or the field of reproductive medicine for humans. Dr. Fatmi is a world-renowned doctor. Dr. Ibrahim is a world-renowned embryologist, and our local team is headed by Dr. Richa as well as Dr. Parul. So what we have done here is created in the last 4 years 6 clinics across the large cities of India, and bringing the most advanced treatments in the field. It is both a question of experience, knowledge, as well as infrastructure. As you know, infertility affects about 15% of the population, and because of lifestyle and changes of cultural issues, these things are actually increasing. And it is more prevalent than even diabetes and cardiac issues. So there are a lot of clinics who offer these treatments. But given what we are providing at a good cost, and the level of care and the infrastructure and the expertise and the care that is provided is second to none. So I will share my points with our group director. He has been to India several times, helped set up these clinics, and then we can share with the team, especially for questions. Thank you very much. I would like to thank you taking time to come and listening at this time to us. So for the past 4 years, under the leadership of Dr. Sumesh, Dr. Richa and Dr. Parul, and Mr. Soni, obviously, we have succeeded setting up several high-quality IVF labs. You know, when you speak about IVF labs, it's like you go to a restaurant. The kitchen is extremely important, and the laboratory is our kitchen. So it is extremely important to have a good cook and a great kitchen. Now you might say, why are you talking about kitchen and cook? Because this is a similarity which is extremely important. You see? The other important point is, you know, IVF and reproductive health is a very virgin field of medicine. If you go to any physician, if you go to a cardiologist, if you go to any physician, these sciences have existed for centuries, if not millennia. It means the experience that we have gained over the past hundreds and thousands of years have taught us how to treat these patients. Now, if I would ask you, how old is reproductive health? What we do? It's 45 years.
it's 45 years. It means, compared to other specialties, we have a huge lack of scientific knowledge. You can imagine hundreds of years, if not thousands of years, compared to 45 years. It's very limited. And what we have done in the past is copy-pasting the research that we have done in Europe, in the US, or somewhere else. But we have learned by working in different parts of the world, there is something which is called geography and infertility. You cannot replicate a patient from Mumbai, Delhi, Chennai, Hyderabad, Ahmedabad, or somewhere else with a patient in Frankfurt, Munich, or Paris. You have different genetic predisposition. You need to have a personalized treatment. And that is where our focus has been from the beginning. Not one size fits all. So through research, also local research, we have tried to go towards what we call individualized medicine, and we are on the way to go the next step in order to have a better and individualized treatment for the women within India. Thank you, Doctor. So, yeah, I agree with Dr. Fatemi that what we do requires collaborative effort between the embryologists and the physicians. Now, from our side, the embryologists, we need to first use technology. Second, we need to modify our protocols in order of finding a way to improve the outcomes so that we give the doctors the embryo with the highest chances of pregnancy. Now in India, we use the same standards that we use, whether it was in our clinics in UAE or our partners in Europe. So we have raised the bar, I think, in India when it comes to embryology with the technologies that we have. We have taken advantage of all the scientific research that we've done to implement them and incorporate them within our SOPs, our protocols in the lab. Thank you. अगर मैं infertility की बात करूं, you all know that the chances of getting a pregnancy is reducing. Infertility का chance increase हो रहा है हमारे population में. क्यों increase हो रहा है? हम ये सोचते हैं क्या? क्योंकि हम चाइल्ड बेयरिंग एज में बहुत सारी और चीज़ें कर रहे हैं, स्टडीज़ हो रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दिया जा रहा है, ट्रैवल प्लान्स बनते हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फर्टिलिटी का एक पोर्शन है वो इग्नोर हो जाता है. अगर हम फर्टिलिटी को इग्नोर करते हैं, और ये एक टाइमलाइन है, ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो कंटिन्यूसली टिक कर रही है, और वो टिक करती रहेगी, वो हमारे लिए वेट नहीं करेगी. तो इसीलिए प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि मेनली वुमेन की एज का बहुत बड़ा फैक्टर होता है प्रेगनेंसी होने के चांसेस में. जैसे आप देखेंगे कि फर्टिलिटी के चांसेस कम हो रहे हैं, वैसे आप देखेंगे फर्टिलिटी क्लिनिक्स के नंबर बहुत बढ़ रहे हैं. अगर आप आज के दिन में मुंबई में देखें तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स पता चलेंगे फर्टिलिटी के, लेकिन क्या वो सभी स्टैंडर्ड काम कर पा रहे हैं? क्या उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम एक लाइफ को बाहर लैब में क्रिएट कर सकें और सक्सेसफुली इम्प्लांट कर सकें? क्या हम वो साइंटिफिक जो फिजियोलॉजी है उसको समझ पा रहे हैं? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. हर कोई एक गाड़ी ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, लेकिन उसमें कितनी साइंस, कितनी इंजीनियरिंग, कितना अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और ये हमारे ART क्लिनिक्स का मेन चीज़ है कि हम साइंस और नेचर को संग में लेके आगे जाते हैं. तो जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट मिल रहा है पेशेंट्स को, वो वर्ल्ड क्लास मिल रहा है, इंडिया में मिल रहा है, और उससे उनके प्रेगनेंसी रेट जो है वो हाईएस्ट है. ये चीज़ अवेयरनेस हमें बढ़ाना है कि प्रेगनेंसी डिले नहीं करना है लोगों को, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. किसी भी तरह का डिजीज़ होता है ना, तो उसका सिम्टम होता है. अगर आपका ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है या एग्स का नंबर कम हो रहा है, इसका कुछ सिम्टम नहीं पता चलता है, तो ये साइलेंटली क्रीप इन करता रहता है, और ये चीज़ पेशेंट्स को पता होना चाहिए. तो हमारी तरफ से हम अपना काम करते हैं, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी तरफ से ये अवेयरनेस बढ़ाएं पॉपुलेशन में, जिससे ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ के क्लिनिक्स को अप्रोच कर सकें, जिससे सही समय में वो प्रेग्नेंट होने का चांस ले सकें. हेलो. सो बेसिकली ऑलमोस्ट आपको भी समझ में आ गया होगा कि IVF ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट केवल एक अच्छे क्लिनिशियन या एक डॉक्टर के केवल बस की बात नहीं है. सो IVF एक पूरा कोलैबोरेटिव ट्रीटमेंट है, एक हाथ की तरह है जिसमें अलग अलग उंगलियां अपने आप में शायद कुछ नहीं कर सकती है. तो ये ट्रीटमेंट में ज़रूरी है कि हम
एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छी लैब, एक स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट और साथ ही साथ में एक अंडरस्टैंडिंग पेशेंट के साथ में वर्क करें, तभी हम लोगों को अच्छा आउटकम मिलेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ पर जो भी पेशेंट आता है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले उनको समझें, फिर उनको ये समझाएं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या एविडेंस है, क्या साइंटिफिक रेलेवेंस है उनकी प्रॉब्लम का, इनफर्टिलिटी को लेके, और उस बेसिस पे उनके ट्रीटमेंट को फॉर्मुलेट किया करें। एंड उसके बाद में जो बेस्ट पॉसिबल मेजर्स या साइंटिफिक टूल्स है उनको यूज़ करके उनके लिए बेस्ट पॉसिबल सक्सेस या आईवीएफ आउटकम निकालने की कोशिश होती है। और यही हम लोग का लगातार एक एफर्ट है कि जैसे जैसे साइंस एडवांस हो वैसे वैसे हम अपने ट्रीटमेंट्स को एडवांस कर सके, ताकि हम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अपने पेशेंट को ART फर्टिलिटी क्लिनिक्स में प्रोवाइड कर सकें। आई थिंक दोस्तों जैसे सबने बताया, जस्ट समिंग इट अप, बेसिकली क्या है कि अब समय ART लॉ एक आया है 2 साल पहले, तो उसने क्या किया, उससे पहले भी IVF की ट्रीटमेंट हो रही थी। ट्रीटमेंट में क्या हो रहा था, किसी एक के एम्ब्रियोज लिए 10 जनों में डाल दिए, राइट, क्योंकि कोई लॉ नहीं था। अब लॉ ने आके क्या किया, उसने बोला नहीं, एक डोनर एक ही को दे सकता है, विच मीन्स एग डोनर्स की क्वालिटी, अब नंबर्स कम हो जाएंगे। अब उसके कम होंगे, उसका प्रॉब्लम क्या, और सरोगेसी जो पहले रैम्पेंट था उसके लिए भी लॉ बड़ा स्ट्रिंजेंट हो गया है। तो अब इससे हुआ क्या है, अब सेल्फ साइकिल्स अपने आप, अपने एग्स, अपने स्पर्म्स, इससे ही बनना है ना। इसमें साइंस की जरूरत है। आज से 2 साल पहले तक साइंस नहीं है, तो कोई भी पेशेंट आया बोला ठीक है नहीं हो रहा है, आप डोनर से करा लो, सरोगेसी कर लो, बड़ा इजी था। एंड दैट इज हाउ रैम्पेंट एंड क्वालिटी कॉन्शियस था, नहीं कर लो। अब हर किसी को तो बच्चा ही चाहिए एट द एंड, राइट, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग अस, वी वांट आवर ओन किड्स, eggs and sperms our own. That needs the science, and that is where I think whatever these doctors are speaking, that is where this expertise come in, and that's where the research and academics and training, teaching. अब इसीलिए जो इतनी सारे खुल रहे हैं सेंटर्स, बहुत सारे बंद भी हो रहे हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अब एग डोनर्स तो मिलेंगे नहीं, तो यानी सेल्फ साइकिल होंगी। पहले 50-60% एग डोनेशन से हो जाता था, अब वो सब होगा नहीं, तो which means you need science, which means you need a good embryology lab, which means you want everything which is the most advanced as per European standards. So I think that is what we all are speaking, and that is where ART comes into picture compared to all other embryology centers, or sorry, ART centers in India. Is difference is huge, but that needs investment, and that's where I think we all come. Over to you. अब आप लोग अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, we are just told about ART what it is. We are happy to take up questions. All experts are sitting here. They'll answer.